Hello and good morning, students. So today also we'll continue with present simple tense. Dear students, yesterday we talked about daily routine and habitual actions. Today we are going to talk about fixed actions or scheduled actions. Even we can say well-planned action going to take place in the very near future. Apart from that, we are going to talk about universal truth, scientific facts, general truth, etc. So let's start without any delay. So see, present simple tense, okay, it also expresses fixed or scheduled actions और वेल प्लान्ड एक्शंस. ऐसे एक्शंस, ऐसे काम जो फिक्स हैं, वेल प्लान्ड हैं, जो शेड्यूल्ड है, जिनका टाइम टेबल बन गया है, एंड दे आर गोइंग टू टेक प्लेस इन द वेरी नियर फ्यूचर. ऑल राइट, मीन्स एक्शंस विच आर वेल प्लान्ड, एक्शंस फिक्स हो गए, उनकी प्लानिंग हो गई है, प्लान चार्ट आउट कर लिए गए, एंड दीज थिंग्स और दीज एक्शंस आर गोइंग टू टेक प्लेस द वे दे आर फिक्स्ड. गॉट इट. और ये काम कैसे हैं? दे आर गोइंग टू टेक प्लेस इन द वेरी नियर फ्यूचर, बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में होने वाले हैं. फॉर एग्जाम्पल, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हियर टुमारो. प्राइम मिनिस्टर हमारे कम्स हियर टुमारो, यहाँ पर कल आ रहे हैं, यहाँ पर कल आएंगे. सो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे कल आएंगे. ऑफ कोर्स वी आर टॉकिंग अबाउट फ्यूचर टाइम, बट सिंस the timetable of prime minister's coming or the time of prime minister's coming is fixed, it is decided. प्राइम मिनिस्टर के आने का टाइम टेबल ऑफिशियली बन गया है, पहले से सारी प्रिपरेशंस हो गई है. सो द अराइवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज बाउंड टू हैपन, द विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज बाउंड टू हैपन. प्राइम मिनिस्टर आएंगे क्योंकि वेल प्लान एक्शन है. गॉट इट. सो ऐसे वेल प्लान एक्शन जो बहुत ही जल्दी होने वाले हैं, निकट भविष्य में, बहुत ही निकट भविष्य में, उनके लिए भी वी यूज़ प्रेजेंट सिंपल टेंस. और प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वी विल यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और फर्स्ट फॉर्म विद एस और ईएस. ऑल राइट. सो द प्राइम मिनिस्टर इज अ सिंगुलर नाउन, कम्स हियर टुमारो, V1 प्लस एस और ईएस. प्राइम मिनिस्टर कल यहाँ आ रहे हैं, और यू कैन से प्राइम मिनिस्टर कल यहाँ आएंगे. सिंस प्राइम मिनिस्टर्स विजिट इज वेल शेड्यूल्ड और वेल प्लान्ड, वी विल यूज प्रेजेंट सिंपल टेंस. ऑल राइट. नेक्स्ट, द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई. ओके, देयर इज समर ब्रेक इन द मंथ ऑफ जून, एंड नेक्स्ट मंथ, दैट इज इन द मंथ ऑफ जुलाई, जनरली कॉलेज रीओपन्स. सो दैट इज ऑफिशियली टाइमिंग, it is fixed. All right. So rather than saying that the college will reopen in July, we say college reopens in July because it is well planned, it is scheduled. Got it. So reopen and reopens as an yes, because we are talking about single college. The train leaves the station at 7 p.m. ट्रेन 7 बजे स्टेशन छोड़ेगी, ट्रेन 7 बजे जाएगी. सो द डिपार्चर ऑफ द ट्रेन इज फिक्स्ड, इट इज शेड्यूल्ड दैट दिस पर्टिकुलर ट्रेन विल लीव द स्टेशन एट 7 p.m. शाम को 7 बजे ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाएगी. सो इट्स फ्यूचर टाइम, बट द टाइम इज इन दिस मोमेंट इज इन अ वेरी नियर फ्यूचर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज फिक्स्ड. All right. So the train will go as per its timetable. Got it. So such actions which are going to take place in the very near future and whose timings is fixed. All right. Actions which are fixed or well planned or timing is fixed, for such actions we use present simple tense, or to express such actions we use present simple tense. All right. The train leaves, again first form as for yes, because here train is the singular, we are talking about some particular one train.
Alright, dear students, so this is about actions or well planned actions which are well scheduled, well planned, fixed, and going to take place in the very near future. Alright, the next fact, see, universal truth, scientific facts, and general truth. Universal truth means the truth that can never be altered. ऐसा सत्य जो कभी चेंज नहीं होता है. Alright, जो कल भी था, आज भी है, आने वाला कल भी रहेगा. Alright, so see, the sun rises in the east. सूर्य पूर्व में उदय होता है. So thousands of years ago, okay, the sun would rise in east. Even today, the sun rises in the east, and even in future, after many years, the sun will be rising in east only. So this is a universal truth. All right, ये ऐसा सत्य है जो पूरे यूनिवर्स में ये this is the same, okay, the same order. Got it? सो ऐसे फैक्ट्स को यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं. द सन राइज मतलब होता है उदय होना. एंड अगेन हियर वी हैव यूज एस एंड ईएस बिकॉज सन इज द सिंगुलर नाउन थर्ड पर्सन. वी आर टॉकिंग अबाउट सन एंड सन इज वन. द सन राइजेज इन द ईस्ट. द अर्थ मूव्स अराउंड द अर्थ. द अर्थ मूव्स अराउंड द सन. अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है. सो सिंस द एग्जिस्टेंस ऑफ दिस universe, the earth keeps on taking ground around the sun. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा ही रही है. All right, so this is also universal fact. Water freezes at 0 degree centigrade. पानी 0 degree centigrade पे जम जाता है. So this is fact, scientific fact, and scientifically it is proven. Water boils at 100 degree centigrades. Got it? Wood floats on water. लकड़ी पानी पे तैरती है. So that is general truth. All right. The earth is round. Earth round है. So this is the main verb. Earth कैसी है? Round है. All right. Here this is the first form of the verb and that is the be form. The earth is round. I am a teacher. So am. I am a teacher. This is my profession. So I am using present simple tense. All right. The soul is immortal. Immortal means amar. Atma amar hai. So again this is the first form of the verb. That is the be form. All right. So see students, we have used here first form of the verb or first form plus as and es. So actions, well planned actions going to take place in very near future, we use present simple tense. That is, we use first form of the verb. Of first form of the verb we use as and es. Similarly, to express universal truth or scientific facts or general truth, we use present simple tense only. And the same way, yesterday we studied for daily routine we use present simple tense. All right, our habitual actions are expressed in present simple tense. All right, so dear students, these are the basic principles of present simple tense. Some action that is the action that takes repeatedly, frequently. ऐसे एक्शन, ऐसे काम जो रिपीटेडली होते हैं, डेली होते हैं, वीकली होते हैं, मंथली होते हैं, एनुअली होते हैं, हाफ ईयरली होते हैं और ओकेजनली होते हैं, सेल्डम होते हैं, कभी कभार होते हैं, ऑफन होते हैं. All right, so such actions, okay, such actions are generally part of this present simple tense. Got it? So dear students, you have to keep in mind first daily routine, then habitual actions, then fixed or well planned actions, then universal truth, scientific truth, and general truth. All right. So these are the basic principles that you must keep in mind. Got it? We have used here either first form of the verb or with first form and as es. All right? Okay. Let's recap, student. He always comes late.
he always comes late, वह हमेशा लेट आता है. This always, हमेशा. This is time adverbial. It shows that this thing happens regularly. वह हमेशा लेट आता है, रोज लेट आता है. We often go for morning walk. Often, often means prior, frequently. We often go for morning walk. You attend the class regularly. तुम नियमित रूप से क्लास अटेंड करते हो. That you have maintained this habit. They generally come here at night. वे सामान्यतः रात को यहाँ पे आते हैं. Generally. All right. He seldom leaves this place. Seldom means कभी कभार. The opposite of seldom is often. She rarely goes out. वो शायद ही कभी बाहर जाती है, बहुत कम बाहर जाती है. राम नेवर अटेंड्स द क्लास. राम कभी क्लास अटेंड नहीं करता है. सो डियर स्टूडेंट्स, दीज हाईलाइटेड अंडरलाइन वर्ड्स आर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स और टाइम एडवर्बियल्स, एंड दीज वर्ड्स जनरली use in present simple tense. Of course these words are used in other tenses as well, but these words generally used in present simple tense. They talk about something that is present right now, that is happening right now. See, always, often, seldom, sometimes, daily, never, rarely, generally, occasionally, once a day, once a week, every day, weekly, monthly, yearly, annually, regularly, rarely. So these are the time adverbials words that you must keep in mind. Generally these words are used in present simple tense. Got it? All right, let's have a look. Well, yes student, then comes the verbs of perception, that is natural action verbs. And natural action verbs or the verbs of perception means how do we perceive, हम किसी चीज़ को कैसे समझते हैं. All right, generally we sense the things outer world. Generally we understand and feel the outer world with our five senses: eyes, ears, nose, tongue and skin. इन 5 सेंसेस से हम एक्सटर्नल वर्ल्ड को एक्सपीरियंस करते हैं. सो ये हमारा जो नेचुरल टेंडेंसी है एक्सटर्नल वर्ल्ड को समझने की, फील करने की. सो दोज वर्ब्स आर कॉल्ड नेचुरल वर्ब. सी, स्मेल, हियर, टेस्ट, फील. ये एक्शन ऑटोमेटिकली होते हैं. द मोमेंट यू ओपन योर आइज यू सी समथिंग. You did not put in efforts to see something. Similarly, smelling. Something is burning, something is disgusting, or something is good, sweet. Your nose tells you. Hearing, something happening, something happens around us. Definitely we'll come to know. The noise would reach to us. Taste, whatever we taste, we can tell. Feel, something we touch or something that we feel. All right. So see here, I see him playing right now. मैं अभी उसे खेलते हुए देख रहा हूँ. मैं उसे खेलते हुए अभी देख रहा हूँ means it is not present continuous tense, and you cannot say that I am seeing. It will be entirely wrong. Why? Because you see someone playing right now. All right, got it? So this see here meaning देखने के सेंस में है, and this is natural action. All right. So I see him playing right now. So that's why we will use here present simple tense and not present continuous tense. Students, keep in mind that these natural action verbs, see, smell, hear, taste and feel, when they are used for their core principle or core value, we always use them as it is. That is, these verbs are generally used in present simple tense only. I see him playing right now. मैं उसे भी खेलता हुआ देख रहा हूँ. Similarly, the flower smells sweet. Flower, फूल कैसा स्मेल कर रहा है? Sweet smell आ रही है. उसकी स्मेल बहुत मधुर आ रही है. So it is not continuous tense. Here we are using smells, first form with s and es.
प्रेजेंट सिंपल टेंस। आई हियर ही इज लिविंग फॉर अमेरिका, मैं सुन रहा हूँ कि वो तो अमेरिका जा रहा है, मैं सुन रहा हूँ कि वह अमेरिका जा रहा है। सो यू कैनॉट से दैट आई एम हियरिंग, नो, आई हियर, दिस इज अ नेचुरल एक्शन, दैट्स वाई सिंपली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। This coffee tastes bitter. Suppose you take a cup of coffee and the moment you taste, okay, and you feel, you say, oh my god, it tastes very bitter, ये तो बहुत कड़वी है. So the moment you taste it, okay, your tongue told you its taste. So this coffee tastes bitter, ये कॉफ़ी बहुत कड़वी है. Got it? So natural verb. Now he feels that he was wrong. अब वो इस चीज़ को फील कर रहा है कि वह गलत था. Got it? So dear students, these are natural action verbs and natural action verbs. Okay, whenever we talk about natural action, are means natural action or actions performed by our senses, we generally use present simple tense. Got it? Next, verbs of appearing. Appear, look और seem. Appear means प्रतीत होना, seem means प्रतीत होना, look means दिखना. Okay, it seems to be very easy or it appears to be very easy. देखने में बहुत easy प्रतीत हो रहा है. All right, but it is not continuous tense. You cannot use like that. It is seeming or it is appearing. No, it seems to be easy or it appears to be easy. All right. Verbs of emotion, जो हमारे इमोशंस भावों को बताते हैं, वो verbs of want, किसी चीज़ को जाना, desire, okay, love, hate, he loves you, I desire health and happiness, मैं अच्छी हेल्थ की और खुशी की इच्छा रखता हूँ. Verbs of thinking, think, suppose, believe, angry. I think, not I am thinking. Okay, I understand, not I am understanding. All right, so these are the verbs related to thinking. Think, suppose, imagine, believe or angry. I think you are right. मुझे लग रहा है कि तुम सही हो. मुझे लग रहा है, मैं सोच रहा हूँ, not मैं सोच रहा हूँ, मैं सोचता हूँ. I think you are right. मुझे लग रहा है तुम सही हो. We believe that he may be armed. हमें लग रहा है कि वह he may be armed, वो हथियारों से लैस रहा होगा. हमें लग रहा है वह हथियारों से लैस होगा. That is our opinion. We believe so. We think so. Got it? So dear students, that you must keep in mind these verbs, verbs of perception, see, hear, smell, taste, feel, touch. All right. Similarly, verbs of appearing, appear, look, seem. Verbs of emotion, love, hate, want, desire. All right. Then verbs of thinking, think, suppose, believe, angry, etc. So you must keep in mind these verbs, and these verbs, when they are used in their basic form, in their exact meaning, then these form will always take first form of the verb, that is the present simple tense. All right. So this is all for today's video, dear students. Thank you very much. Goodbye. See you soon in my next video.